Hello students, today's topic is tense, काल. Present, past and future. Three parts of tenses has already been told by myself. Today we are going to discuss on present tense. वर्तमान काल. It is defined as in present of time being the work done by the doer is called present tense. वर्तमान चल रहे समय में किसी काल के होने, होते रहने, हो चुके होने या होते रहने को वर्तमान काल कहते हैं. It is divided into four parts. वर्तमान काल को चार भागों में बांटा गया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. As the definition, as it is defined, that in present of time being, all the parts of present tense related to the present of time being. वर्तमान काल के जितने भी चारों भाग हैं वो वर्तमान से ही संबंध रखते हैं. Now present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. One by one, whole of the parts will be described. And present indefinite, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल. Indefinite, अनिश्चित, but related to present tense. The doer wants to do the work, but it is uncertain that the work may be completed or may not be completed. करता, doer कार्य को करता तो है, लेकिन अनिश्चित है कि वह कार्य हो रहा है कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा. And now it is uncertain, right? यह अनिश्चित है that the work may be completed, पूरा होगा, और may not be completed, या पूरा नहीं हो सकता है. It is indefinite. Now present indefinite, simple present tense, it is called simple present tense also. Present indefinite is also divided into four parts. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी चार भागों में बांटा गया है. अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव. With the combination of all of the four parts, it is called present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित वर्तमान काल में चार भाग होते हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव. स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. All of the four parts of present indefinite having its own specialties, having its own peculiarities, it is described in grammar. Affirmative, the construction of four of the parts is different to one another. इन चारों भागों का बनावट, construction, in the process of construction of work,
all of the four parts have its own specialties. It can be differentiated with its meaning and construction in grammar. इन चारों भागों की बनावट में अंतर होता है। कंस्ट्रक्शन देखने से, बोलने से या पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि ये चारों भागों में क्या अंतर है। अफर्मेटिव। नाउ today with introductory formation of all these things, I want to finish this. Tomorrow I shall go through the particular process of present indefinite, and all parts will be described widely in wide range with construction of the sentence. What is the difference between all of four sentences? How it can be constructed, and at last the result will be given to you that how all these parts are different to each other. Thank you. Please subscribe and like this video.